Good afternoon and welcome everyone to this live session, guys. Hope you guys are doing fine. Good afternoon and welcome everyone to this live session. I'm so sorry for this. So, in today's daily news analysis for 4th of December 2019, we are going to analyze Essential Commodities Act in the light of discussion in Parliament on onion prices. Then GST revenues not enough for states compensation. Central government का ये कहना है कि GST revenues have not been enough for compensation of the states. तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस. और इसके अलावा एडिटोरियल्स में इजराइल पैलेस्टीन पे जो एडिटोरियल है उस पर भी डिस्कशन रहेगा. इंडिया स्वीडन रिलेशंस, इंडिया एंड स्वीडिश रिलेशन, इसके ऊपर भी डिस्कशन रहेगा. सेंटर इज कंसिडरिंग न्यू कार्डर फॉर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स फॉर द स्टेट ऑफ मिजोरम. इससे पहले हमने स्टडी किया था कि अरुणाचल के लिए भी ऐसा ही एक कार्डर के बारे में डिस्कशन चल रहा है, राइट. देन सर्चिंग फॉर विक्रम पिक्सल बाय पिक्सल. तो ये स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है इसे कवर करेंगे. हाउ विक्रम लैंडर was found by an amateur enthusiast and confirmed by NASA. DRDO to develop naval fighter jet. And in November outreach, public sector banks, they lent rupees 2.39 lakh crores. Corporates they get lion's share of around 97,000 crore rupees. Clear? So all these things are there. Telecom service providers, they want floor price for mobile data services. क्योंकि जियो जो है मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्या कर रहा है जियो इज ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट थ्रू डेटा बाय लोअरिंग द प्राइस ऑफ द डेटा, राइट. तो इसीलिए ये किया जा रहा है कि फ्लोर प्राइजेस, एक मिनिमम प्राइस जिसके बिलो कंपनीज जो हैं प्राइजेस को नहीं कर पाए, राइट. तो ये सब चीजें इसमें रहती हैं. तो कमिंग हियर टू दिस important editorial, first of all, the article says that to deal with the assault on women, better policing, fast track courts, quick sentencing are the need of the hour, and every curriculum should be made every curriculum of CBSE or other school curriculum should be gender sensitive right from the school itself. कि फांसी पे लटकाने से प्रॉब्लम हल होगी टू सम एक्सटेंट, लेकिन जो रियल रिफॉर्म है माइंडसेट चेंज करने से होगा. माइंडसेट चेंज करने के लिए हमें ये सब करने की ज़रूरत है. नाउ द आर्टिकल सेज दैट एनी फ्यूचर सॉल्यूशन टू द इजराइल पैलेस्टीन should rectify the past evils by compensating and restituting lost land and property, enable the repatriation. तो ये इजराइल पैलेस्टीन का जो इशू हम बार बार देखते रहते हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में है. रेस्टिट्यूटिंग द लॉस्ट लैंड, जो लैंड इजराइलीज ने पैलेस्टीनियन से दबाई है, पैलेस्टीन लोगों की जो लैंड है उनको वापस देना होगा. एंड एनेबल द रिपैट्रिएशन ऑफ रिफ्यूजीज एंड ऑफर डेमोक्रेसी फॉर ऑल हु लिव इन हिस्टोरिकल पैलेस्टीन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. क्लियर? सो ऑल दिस इज देयर. नाउ कमिंग टू दिस, बाकी के एडिटोरियल्स पे भी नजर डालेंगे. सबसे पहले आगे चलते हैं. Financial year 2018, the efficiency of Indian Railways dropped to its lowest in the last 10 years, according to a recent report by CAG of India. The organization's financial health has got worsened in the recent years. तो पिछले कुछ सालों में देखा गया कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ और ज़्यादा खराब होती जा रही है. इट्स सरप्लस रेवेन्यू ड्रॉप्ड टू 1665 करोड़. तो सरप्लस रेवेन्यू कम हो रहा है. डिविंडलिंग रिटर्न्स जो है कम हो रही हैं. और रेलवेज के केस में ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशो रेलवेज की 98% चल रही है, यानी कि जितना रेवेन्यू रेलवेज लेके आता है उसका 98% रेलवेज के ऑपरेशंस में चला जाता है, राइट. जैसे ऑपरेटिंग रेशो कहा जाता है. क्लियर? देन द डिक्लाइन इन ऑपरेटिंग रेशो एंड रेवेन्यू सरप्लस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू पुअर इनकम ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड फाइनेंशियल ईयर 2018. इन फाइनेंशियल ईयर 2018, growth of earnings per passenger slackened significantly. It got reduced significantly for the third consecutive year, while passenger traffic grew at a robust pace. Right. So this is their mounting losses. Earnings from passengers grew at a slow pace as operational losses incurred in classes such as sleeper, sleeper class, second class, and ordinary classes ballooned. Okay. तो operational losses इसमें जो सब्सिडाइज्ड पोर्शन है रेलवेज का, जो सब्सिडाइज्ड कोचेज हैं या जो क्लासेस हैं, उसमें रेवेन्यू रेलवेज का जो डिक्लाइन होते चले गए और लॉस पर पैसेंजर बढ़ते चले जा रहा है. नाउ अब आगे चलते हैं.
सिटीजनशिप बिल लाइकली नेक्स्ट वीक। सरकार जो है सिटीजनशिप बिल को पुश कर रही है कि लोकसभा में ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, अब राज्यसभा में है ये बिल। बिल का एनालिसिस हम देखेंगे, पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे। बिल अमेंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू मेक इलीगल migrants who are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan eligible for citizenship. बिल अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इलीगल माइग्रेंट्स जो हिंदूज हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं या जैनीज हैं या पारसीज हैं, उनको एलिजिबल करार दे रहा है ये बिल। उनकी एलिजिबिलिटी के लिए एक विंडो क्रिएट करी जा रही है। अब इसमें मुस्लिम्स मिसिंग हैं, तो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कह रही हैं कि मुस्लिम्स क्यों मिसिंग हैं। मुस्लिम्स आर कॉन्स्पिक्यूअस बाय देयर एब्सेंस इन दिस अमेंडमेंट बिल। Illegal migrants who are Hindus, they would be given the citizenship of India. Who are Jains, they also would be given, but not the Muslims. ये कहा जा रहा है कि ये गलत है, बिल जो है कम्युनल है इन नेचर में। बट यहाँ पे ध्यान रहे कि जो बिल है सिटीजनशिप एक्ट, अफगानिस्तान से आने वाले मुस्लिम्स को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करता है। सिटीजनशिप एक्ट पहले वाला, बांग्लादेश का भी जो एक्ट है, इसका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये है सिटीजनशिप एक्ट में कि मुस्लिम्स को नए अमेंडमेंट बिल में मुस्लिम्स को क्यों नहीं रखा गया। इसका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये है कि ऑलरेडी इन कंट्रीज से आने वाले जो मुस्लिम्स हैं वो तो इन कंट्रीज से मुस्लिम्स वैसे तो आते ही नहीं, वो वहीं पे ही रहते हैं अपनी कंट्रीज में। लेकिन अगर आते हैं तो वो आते हैं सिख्स, क्योंकि सिख्स को, बुद्धिस्ट को वहाँ पे परसिक्यूट किया जा रहा है, उन्हें वहाँ पे टारगेट करके एथनिक क्लिंजिंग करी जा रही है पाकिस्तान में खासकर, राइट। और बांग्लादेश में भी टू सम एक्सटेंट। अभी तो बांग्लादेश में सरकार जो है, शेख हसीना गवर्नमेंट है जो कि अच्छा काम कर रही है, जो कि सेक्युलर है अप्रोच में। लेकिन पहले देखा गया है कि बांग्लादेश में ऐसी सरकारें हैं जो स्पेसिफिकली हिंदूज़ को टारगेट करती हैं। तो अब ऐसी सरकारों के राज में कम्युनल जो है सिनेरियो ना बन जाए, इसीलिए ये किया जा रहा है कि सिर्फ बाकी कम्युनिटीज़, मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी कम्युनिटीज़ को यहाँ पे पनाह देने के लिए ये किया जा रहा है। अंडर द एक्ट, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इज, अभी का जो 1955 का एक्ट है उसमें ये कंडीशन है कि जो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, दे मस्ट हैव रेजाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स एंड फॉर 11 ऑफ द प्रीवियस 14 ईयर्स। पिछले 14 सालों में से 11 साल वो इंडिया में रहे हों, राइट। So this is there. The change bill क्या कर रहा है? Bill relaxes this 11-year requirement to 6 years for persons belonging to same 6 religions and 3 countries. इस कंडीशन को रिलैक्स किया जा रहा है कि सिर्फ 14 साल में से 11 साल की बजाय आप सिर्फ 6 साल भी यदि इंडिया में रहे हैं और इन 3 कंट्रीज़ में से एक कंट्री में से हैं और इन 6 रिलीजन्स में से किसी एक रिलीजन में से हैं, तो आप एलिजिबल हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। यानी कि रिलैक्सेशन फॉर दीज कम्युनिटीज़ विच आर बीइंग टारगेटेड इन दीज कंट्रीज। बिल प्रोवाइड्स दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स मे बी कैंसल्ड इफ दे वॉलेट एनी लॉ। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस भी करी जा रही है कि अगर कोई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, अगर वो इंडिया में माइग्रेट करते हैं तो उनकी या फिर उनको ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड मिला हुआ है, अगर वो इंडिया का कोई भी लॉ वॉलेट करते हैं तो उनकी सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है, राइट। तो बिल मेक्स इलीगल इमिग्रेंट्स एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस मे वॉलेट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। Why not Muslims? Why all other 6 religions and why not other religions apart from these 6? Clear? तो ये सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। Then bill allows the cancellation of overseas citizens of India registration for violation of any law. This is a wide ground that may cover a range of violations including minor offences, parking in a no zone, no parking area, etc. Under the 1955 Act, the overseas citizens of India card holders registration may be cancelled if he violates a law for which he is, number 1, sentenced to imprisonment for 2 years or more. अभी वाले एक्ट में तो ये है कि अगर कोई ऐसे लॉ की वॉलेशन करता है जिसमें कि 2 साल से या 2 साल 2 years या 2 years से ज़्यादा की पनिशमेंट है, तो ही ओवरसीज सिटीजन्स कार्ड ऑफ इंडिया उनका छीन लिया जाएगा, उनकी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैंसिल कर दी जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये है
कि एंड विद इन 5 years ऑफ हिज OCI रजिस्ट्रेशन, अगर पहले 5 साल में कोई इंडियन लॉ को वायलेट करता है तो उसकी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया छीन ली जा सकती है. इट कुड बी स्नैच्ड अवे. Right, so this is there. This means that even the offences with number one lesser penalties or the offences which have been committed after 5 years of OCI registration could be covered under the bill. Yeah, so this is there. So bill is strengthening the provisions for cancellation of OCI, and the second aspect of bill is that it is actually becoming lenient for giving the citizenship of India to the people, to the persons belonging to these six religions, including Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians from Afghanistan. Practice MCQs. The provisions relating to citizenship are contained in Articles 5 to 11. Right? तो जो provisions हैं ये कौन से उसमें दे रखे हैं? Article 5 to 11 आपके लिए पढ़ना जरूरी है. In part 2 of the Constitution of India, the Constitution of India provided a single citizenship for the entire country. Third thing is, since 2003, dual citizenship is allowed by Indian law, that is called overseas citizens of India. Fourth is, a non-resident Indian is a citizen of India. Just 1 minute. Is a citizen of India but has not registered for citizenship in India. Clear? आगे चलते हैं अगली न्यूज पे. GST revenues not enough for the states compensation. The center has written to all the states voicing the concern that due to lower goods and services tax collections, the compensation cess might not be enough to pay for the losses arising out of the taxation system. Just trying to have a look at your queries. If you have any questions, you can ask your questions also side by side. I can see the comment by Rahul. Anybody else, if you have any questions, you can ask. Now, the center has written to all the states which are voicing concerns that due to lower goods and services tax collections, the compensation cess might not be enough to pay for losses arising out of the tax system. Right? So, this is there. The communication comes at a time when several states, including Rajasthan, Kerala, Delhi, Punjab, and other states, have publicly urged the center to transfer pending compensation payments as they have not received the dues for several months. Right. The government of Punjab has even said that it may take the matter to Supreme Court if the center does not release the dues. तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कर्जा जो है बढ़ते चले जा रहा है. अब ये आश्वासन, ये एश्योरेंस दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जीएसटी के आने से पहले यदि पंजाब गवर्नमेंट का रेवेन्यू वैट के तहत वैट से यदि रेवेन्यू 55,000 करोड़ रुपीस था पर ईयर, अगर वो जीएसटी के आने के बाद 50,000 या 48,000 करोड़ रुपीस हो जाएगा, तो जीएसटी के आने के बाद क्योंकि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कॉम्पेंसेट करके पंजाब गवर्नमेंट को 7,000 करोड़ रुपीस देगी. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. राइट. तो अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और बाकी सब सरकारें ये कह रही हैं कि जीएसटी रेवेन्यू में क्योंकि कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जीएसटी के तहत जो पैसा कलेक्ट हो रहा है वो उतना नहीं है. The money that is being collected through GST is not same as the money that was being collected under VAT system. Right? So that is why it is being said that center should now compensate the states. The issue will be discussed in detail at the next GST Council meeting scheduled for the second fortnight of December. यानी कि 15 दिसंबर के बाद एक जो मीटिंग होने जा रही है जीएसटी की, उसमें ये सब मैटर्स पे डिस्कशन रहेगा.
अगर एक नज़र हम जीएसटी कलेक्शंस पे डालें तो जीएसटी कलेक्शंस वेंट डाउन इन द मंथ ऑफ सितंबर बट दीज हैव रिकवर्ड इन द फॉलोइंग मंथ्स। मई में जीएसटी की कलेक्शंस अच्छी चल रही थी, उसके बाद में हमने देखा कि कुछ कुछ रीजंस की वजह से ये कलेक्शन जो है ये नीचे चली जा रही हैं, राइट। अब उनको रिकवर करने की कोशिश करी जा रही है। नाउ दिस सिचुएशन assumes significance because it was the promise of compensation to the states for losses arising out of GST implementation, right. Now situation assumes significance because it was the promise of the compensation to the states for losses arising out of GST implementation that convinced a large number of reluctant states to sign onto the new indirect tax regime. Now, in the letter, the centre also asked the states to submit their suggestions by December 6 on augmenting the GST collections. तो सेंटर ने स्टेट्स को ये कहा है कि अपने सजेशंस दो कि जीएसटी के तहत कलेक्शंस कैसे बढ़ाई जाए, और सेंटर ने उल्टी जो बॉल है स्टेट्स के खेमे में डाल दी, ये कह के कि जो इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह जो जीएसटी में नहीं आते उन्हें भी जीएसटी में इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि जीएसटी शॉर्टफॉल को कवर अप किया जा सके। क्लियर? Now, they were specifically asked to look into the ways to review the items currently exempted from GST, review the tax rates and compensation cess rates on various items, and on improving the compliance measures. These suggestions will be placed before the committee of officers, revenue officers or finance secretaries from all the states and the centre that has been set up to suggest measures to increase the collections. The government had budgeted for 6,63,000 crore rupees from the GST collections for current financial year 2019-20, out of which the government has collected only about 50% in the first 8 months. Government has collected only 50%. तो 8 महीने हो गए और इसका सिर्फ अराउंड जो है 3,30,000 रुपए 3,30,000 crore rupees have only been collected, and it's been more than half year, more than 8 months. So it had targeted around 1,09,000 crore of compensation cess. तो अगर कोई राज्य सरकारों के रेवेन्यू में शॉर्टफॉल होती है तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस में ये एक्सपेक्ट किया गया था दैट देयर कलेक्शन वुड बी अराउंड 1,09,000 crore rupees, out of which it has so far collected only 64,000 crore rupees. राइट, तो डबल वैमी है सेंटर के लिए। अब यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला जाएगा कि इसे कॉम्पेंसेट करो तो भी बड़ी प्रॉब्लम है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सेंटर मलिंग न्यू आईएएस आईपीएस काडर फॉर मिजोरम। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिस्टर जितेंद्र सिंह का ये कहना है, ही हैड डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग टू अंडरटेक एन एक्सरसाइज टू स्टडी द implications and feasibility of creating a separate cadre for all India services officers like IAS and IPS for Mizoram. Right. तो पिछले दिनों हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश ने भी ये डिमांड उठाई थी कि उनके लिए IAS और IPS का एक सेपरेट कार्डर होना चाहिए। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, अगर IAS IPS ऑफिसर्स मिज़ोरम को एगमोट कार्डर से अभी जो दिए जाते हैं, अगर वो असम, गोवा, मिज़ोरम और यूटीज़ में से मिज़ोरम से उनकी ट्रांसफ़र अगर यूटीज़ में हो जाती है, चंडीगढ़ में या दिल्ली में हो जाती है या अंडमान एंड निकोबार में हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम रहती है कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास में थी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के रूप में, वो इन्फॉर्मेशन अगले ऑफिस के जो ऑक्यूपायर रहेगा उसके पास में, जो नए आईएएस ऑफिसर उनकी जगह पे आएंगे उनके पास में वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। इसी वजह से सेपरेट कार्डर्स बनाने की बात करी जा रही है। तो ये हमारे लिए रेलिवेंट है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, कार्डर पॉलिसी या फिर कार्डर एलोकेशन। डू वी नीड सेपरेट कार्डर और डू यू थिंक, question for mains, do you think that there is a need for separate cadre for all the states, separate cadre of all India services for all the states, right? तो ये एक बड़ा इसमें से question बन सकता है। That is the only relevance of this news clipping. Now India tests the Swedish technology to reduce stubble burning. Stubble burning की वजह से जो pollution इंडिया में देखा जा रहा है उसको reduce करने के लिए, to find a solution to stubble burning, India is testing a Swedish technology.
This technology is called as torrefaction that can convert rice stubble into biocoal. The Office of Principal Scientific Advisor to Government of India has funded a pilot project in Punjab to evaluate the feasibility of technology. BioEndiv, a Swedish company, has set up a pilot plant at the National Agri-Food Biotechnology Institute in Mohali. Stubble to biocoal. The technology involves heating up straw, grass, sawmill residue, and wood biomass to 250 degrees Celsius or to 250 degrees Celsius to 350 degrees Celsius in the absence of oxygen. This changes the elements of biomass into coal like pellets. These pellets can be used for combustion along with coal for industrial applications like steel and cement production. If scaled up, about 65% of the biomass could be converted to energy. If scaled up, तो ये टेक्नोलॉजी हम स्वीडन से लेने की बात कर रहे हैं, which is going to be beneficial for India. Yeah, so this is there. Now, so far the technology has only been substantially tested in Scandinavia as a 16,000 ton per year plant. The BioEndiv project was discussed at a gathering chaired by King Carl Gustaf XVI of Sweden. तो TARS, H2, ये water और CH4, methane. Torrefaction removes the moisture and volatiles from the biomass leaving biocoal. तो ये चारकोल इसमें से बन सकता है, राइट, काइंड ऑफ. तो इसीलिए इसे जो है इंडिया अडॉप्ट करने के लिए बात कर रहे हैं. टोरीफैक्शन इज अ थर्मल प्रोसेस. व्हाट इज टोरीफैक्शन? टोरीफैक्शन इज अ थर्मल प्रोसेस to convert biomass into a coal-like material, which has better fuel characteristics than the original biomass. Torrefied biomass is more brittle, making grinding easier and less energy intensive. Grinding easier हो जाती है और less energy intensive हो जाती है. Compared to fresh biomass, storage of the torrefied So compared to fresh biomass, storage of the torrefied material can be substantially simplified since biological degradation and water uptake is minimized. Biological degradation और water uptake इसमें minimize होने की वजह से. So now coming here, Swedish king seeks climate awareness. So India and Sweden should spread awareness of climate change to grassroots levels. To help create a front to meet the global challenges, said the Swedish king Carl XVI Gustaf. Now, the Swedish king urged Indian farmers to convert agricultural waste into a profitable business, and Queen Sylvia demanded a campaign to end sexual violence in India. Queen Sylvia. Right, so all this is there. Now, the royal couple arrived in India and met Prime Minister Narendra Modi. The Indian and Swedish delegates participated at a high-level dialogue on innovation policy, where science and technology collaboration between the two sides was formed up. Both sides signed 3 agreements. Both the sides had signed 3 agreements, including the one that will facilitate closer scientific research in polar science. Swedish king expressed concerns about stubble burning in the agricultural fields in northern India and proposed that the farmers should be trained in new ways of disposing of agricultural waste in a profitable manner. Swedish king expressed concerns about stubble burning in the agricultural fields. So this is their royal couple who are on their 3rd visit to India said India has progressively become aware of the threat of climate change. So इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है. Pointing to the number of Nobel Prize winners from India, the Sweden king acknowledged that the Nobel Prizes won by Indians from Mr. Rabindranath Tagore to Abhijit Banerjee indicate the high quality of research and academics in the country. India and Sweden were part of the global disarmament campaign for many years, and the king remarked that both sides think similarly on such globally relevant issues even today as well. Right, mapping. तो मैप में अगर हम देखें तो स्वीडन दिस इज द कंट्री. You have to read about the climate of Sweden since this visit is happening in India, and climate change is being talked about, and the stubble burning is also being talked about. So all these are environmentally and climatologically important arenas, right? तो इसीलिए थोड़ा सा climate पे Sweden के नज़र डाल लें. Now coming here, the
this Sweriges Risk Bank Prize in Economic Sciences in the memory of Alfred Nobel 2019 has been given to Sweriges Risk Bank Prize in Economic Sciences. तो ये आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में. सर्चिंग फॉर विक्रम पिक्सल बाय पिक्सल, इंडियन एक्सप्रेस ने इसे एक्सप्लेन किया है. हाउ विक्रम लैंडर वाज फाउंड बाय एन amateur enthusiast and confirmed by NASA. How the Vikram lander was lost. How it was the Vikram lander lost. So the Vikram lander is a part of Indian Space Research Organization's Chandrayaan 2 moon mission, all other parts of which are going on as planned. The landing of Vikram was targeted for a plane about 600 km from the south pole of the moon. The landing of Vikram was targeted for a plane about 600 km. However, ISRO lost the contact with their lander shortly before the scheduled touchdown on September 7. On September 26, NASA released a mosaic image of the site taken by its Lunar Reconnaissance Orbiter LRO on September 17. Right. NASA invited the public to compare the released images with previous images of the same area so that they could find the signs of lander. Many people downloaded the mosaic to search for the signs of Vikram. How was Vikram lander found? Shanmuga Subramanian, an IT professional from Chennai, contacted the LRO project. After receiving Subramanian's tip, the LROC team confirmed the identification by comparing before and after images. When the images for the first mosaic were acquired, the impact point was poorly illuminated and thus not easily identifiable. Two subsequent image sequences were acquired on October 14 and 15 and November 11. So debris, soil disturbance, etc. ये सब चीजें हैं. तो this is how it was found. Now DRDO to develop naval fighter jet. DRDO has offered to develop a new twin engine deck based fighter aircraft for the Navy based on experience of naval light combat aircraft, and it should be ready by 2026. The Navy is expected to have the first indigenous aircraft carrier Vikrant operational by 2022. The Naval Light Combat Aircraft recently successfully completed the takeoff and landing trials on the Shore-Based Test Facility SBTF in Goa. The current light combat aircraft Mark 1 was a technology demonstrator, and it would further be put to carrier compatibility tests, and if it worked, whatever lessons learned would be plowed back by the DRDO into the new fighter to be developed. Right. Navy said that they were preparing the case for IAC-2 and finalizing the requirements. After this, they would go to the government for acceptance of necessity, and it would be followed by design consultancy. तो इंडिया में जो न्यू ट्विन इंजन एक फाइटर क्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, अब बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, डीआरडीओ ने ये प्रपोज किया कि हम इसे डेवलप कर सकते हैं. एंड इसके अलावा ये जो जानकारी है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 जो बड़ा एक शिप है एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे हम कहते हैं विक्रांत विल बी ऑपरेशनल बाय 2022. Now coming here, IAC-1 is under the advanced stage of construction in Kochi. All ship-based issues are over and trials would begin now. Navy is scheduled to host its largest multilateral exercise, Milan, off the coast of Visakhapatnam in March 2020, for which 41 countries have been invited. So far, over 15 countries have confirmed their participation. However, China has not been invited to this meeting, right? Now, in November outreach, public sector banks lent rupees 2.39 lakh crores. कल के DNA में हमने देखा था कि purchasing manager, manufacturing purchasing managers index is increasing.
ओके तो अभी उसी चीज़ को आगे थोड़ा सा एक इंटरलिंक्ड वे में हम स्टडी करें तो अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की लेंडिंग बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ टू थिंग्स, या तो सैलरीज या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा. Public sector banks have disbursed loans worth rupees 2.39 lakh crore during the outreach program in November, taking the total disbursals during the 2 months of program, October and November 2019, to 4.91 lakh crore. The strong outreach effort of the public sector banks has continued in November as well, with the disbursement of rupees 2.39 lakh crore to micro, small and medium enterprises, non-banking financial companies, corporates like Tata's, Ambani's, Adani's, retail and agricultural sectors borrowers. Okay, in October, public sector banks have disbursed around 2.52 lakh crores worth of loans. The largest beneficiary of the loans disbursed continues to be the corporate sector, which received loans worth rupees 97,000 crores, right? तो ये थोड़ा सा देख लेना इसे. तो MSME सेक्टर, जैसा मैंने बताया, दिस इज अ प्री इंडिकेटर दैट ग्रोथ इज गोइंग टू इंक्रीज इन दी, और ग्रोथ में इंक्रीज इन दी कमिंग मंथ्स. MSME sector has also been a major beneficiary, receiving around 35,775 crore worth of loans in November, with a total of rupees 72,000 or 73,000 crores over the period of 2 months. Farmers were also big beneficiaries of the program, receiving rupees 37,870 crores worth of loans in November and a total of 78,000 crore over October and November. Non-banking financial companies received 25,000 crore rupees approximately from public sector banks in November. Public sector banks being adequately capitalized and with the record recovery underway, they have sufficient liquidity support to credit growth. MSME loans, loans to NBFCs, loans to corporate, home loans, vehicle loans, educational loans, agricultural loans, ये सारे लोन्स का डेटा थोड़ा सा एक नज़र देख लेना इसे. अब इसके बाद एक और न्यूज़ है एनपीएस से रिलेटेड. बैंकिंग सेक्टर के एनपीएस 81,000 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ लोन्स written off by banks in the first half of financial year 20. Right? As per RBI data on global operations, public sector and private sector banks wrote off rupees 81,000 crore rupees during the financial year 2019-2020 till September 30, 2019. The gross non-performing assets of both public sector and private sector banks, they rose from around 3,12,000 crores as of March 31st, 2015 to 10,21,000 crore rupees as of March 31st, 2018. This has subsequently fallen by rupees 81,000 crore rupees to come to rupees 9,41,000 crores as of September 30, 2019. State Bank of India wrote off the highest amount of loans. तो ये लोन्स को राइट ऑफ करने से अब बैंकों को जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना था 9.5% का, वो अब बैड लोन्स पे नहीं करना पड़ेगा. इसीलिए लोन्स को राइट ऑफ करने से बैंक्स की बैलेंस शीट्स क्लीन होंगी और बैंक्स फ्रेश लेंडिंग के लिए, नई लेंडिंग के लिए रेडी होंगे. तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर बैंक जो है पुराने लोन्स को राइट ऑफ कर रहे हैं तो नए लोन्स भी बैंक्स देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट फिर अकॉर्डिंगली कमेंसुरेटली कम हो जाती है. क्लियर? बैंक्स को पुराने बैड डेट्स के लिए ज़्यादा पैसा रिजर्व नहीं रखना पड़ेगा. As the borrowers of written off loans continue to be liable for repayment and the process of recovery of dues from the borrowers in written off loans accounts continues, write-off does not benefit the borrowers. Borrowers को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बैंकर्स को इसमें फ़ायदा है, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अब ये कह रहे हैं कि एक फ्लोर प्राइस होना चाहिए, एक मिनिमम फ्लोर प्राइस for mobile data services. Bharti Airtel Limited, Reliance Jio and Vodafone Idea Limited that have increased the tariffs by up to 50% have written to Telecom Regulatory Authority of India seeking implementation of a minimum tariff for mobile data services as a real and sustainable remedy.
for the sector reeling under financial stress. All the current telecom service providers in the private sector, namely Bharti Airtel Limited, Reliance Jio and Vodafone Idea Limited, are in complete agreement that TRAI should be requested to regulate tariffs by setting the minimum price for data services. अगर ये मिनिमम प्राइस नहीं है डेटा सर्विसेज के लिए तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जियो जैसी जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनी या जियो जो मार्केट शेयर एक्वायर करना चाह रही है, जानबूझ के लॉस में अपनी सर्विसेज कस्टमर्स को दे के, इसे हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मार्केट को कैप्चर करने के लिए पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, या फिर इसे हम बोलते हैं कि मार्केट एक्विजिशन के लिए प्राइजेस को लो करके बाकी कंपनीज को लॉस में पहुंचाना और फिर अपनी मोनोपोली या ओलिगोपोली एस्टैब्लिश करना. दिस इज व्हाट जियो हैज बीन ट्राइंग टू डू सिंस 2016. Pointing out that tariff correction at the current level of fierce competition is not possible, tariff correction by any service provider, COAI said that the only option available is prescription of a minimum tariff for mobile data services by the authority. Right, so this is there. Now coming here, COAI has proposed that TRAI consider increasing the floor tariff for data over 9 months in 2 steps. As Indian consumers are price sensitive and without affordability, there is a real chance of contraction of demand. At the same time, the authority would be aware that unlike mobile data, voice services are considered as essential services, especially by the subscribers at the bottom of the pyramid, and therefore would need to be continued under the present forbearance regime. Authority would be aware that unlike mobile data, voice services are considered as essential services, especially by the subscribers जो गरीब लोग हैं उनके लिए, right? And therefore टेलीकॉम सर्विसेज तो इन्हें प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी. तो मोबाइल डेटा पे ज़्यादा जो फोकस के वजह से अब जो टैरिफ रिड्यूस किया जा रहा है, उसकी वजह से टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने में इन कंपनीज को रेवेन्यू और लॉस, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रेशो जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है. व्हाट आर द चैलेंजेस facing Indian telecom sector? Discuss also suggest what needs to be done to overcome these challenges. So I have covered this topic in the previous DNA videos, and I request you all to please ask Unacademy through the comment section to create a playlist for the month of December and November. I have done the DNA videos. There were some initial teething problems in the Unacademy UPSC live channel, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो. इस चैनल पे थोड़ी दिक्कतें आने की वजह से मैं DNA कुछ दिन नहीं कर पाया. Now I'll be doing DNA regularly on this channel, provided there are no glitches. तो Unacademy Plus में आप comment section में लिख सकते हो कि please create a separate playlist and subscribe. You can subscribe to this channel in order to get regular updates. Right? A tightrope walk for monetary policy panel members. अब $1 million क्वेश्चन सबसे पहले ये उठता है कि क्या RBI आने वाले समय में रेट कट करेगा? The 5th bi-monthly review of the monetary policy is probably the most challenging policy review for RBI governor. Since RBI governor's first policy review in February, the objective has been only to revive growth, as retail inflation was comfortably around the central bank's tolerance zone of 4%. Despite a 135 basis points reduction in the policy rate since February, the growth has not revived. GDP growth dipped further in July to September quarter to 4.5%, the lowest in 26 quarters. पिछले 4.5 सालों में सबसे कम ग्रोथ. Retail inflation has started increasing now. अब ये बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या RBI ऐसे माहौल में एक और रेट कट करेगा? CPI based inflation was at a 16-month high of 4.62% in October. The rise in inflation was mainly driven by increase in food prices. ये भी आपको पता होना ज़रूरी है. कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन विच अमाउंट्स टू हाफ ऑफ द इन्फ्लेशन बास्केट. कंज्यूमर प्राइस का इन्फ्लेशन का हिस्सा जो है इन्फ्लेशन बास्केट में अराउंड 50% रहता है. वो इन्फ्लेशन कंज्यूमर फूड इन्फ्लेशन जो है 7.89% बढ़ी है कंपेयर टू 5.1% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फर्दर इन द कमिंग मंथ्स. दिस मेक्स द डिसम्बर पॉलिसी रिव्यू फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर्स complicated. So this was all in today's daily news analysis, guys.
Thank you. Thanks for watching. See you tomorrow. Tomorrow the DNA would be done at around 10 a.m. Today I got late because of some technical issues. So tomorrow the DNA will be done on time. Stay tuned. Thank you guys. If you have any queries or any questions, you can reach out to me through my email ID studiosjatin@gmail.com. Thank you.